Now next thing, to derive a formula by using a dimensional formula. Uh, the time period t is the oscillation of a simple pendulum. Okay, where one is the simple pendulum is here. The time, okay, time period is the t depend upon the length and acceleration due to gravity. Means we find the time period of a oscillation of a pendulum, okay, with the help of a length and acceleration due to gravity. Now simple thing, let us assume t is directly proportional to length and gravity, okay, where the l power l we suppose या we assume a and power of a g we assume a b, or when we remove the proportionality sign, so we, okay, put a constant value k, okay, t is equal to k l a g b. Now k is the constant which is dimensionless, no dimensional formula is here, okay, of the k, and dimension of t you know l0 m0 t1, and if I talk about the dimensional formula of length, so that's mean l की power 1, so we can put L1 M0 T0. And if I talk about the G, dimensional formula of acceleration due to gravity, so we had already discussed in a previous, okay, when we derive the formula of acceleration LT minus 2. So that's mean M0 L1 T minus 2. Now from this T is equal to T is equal to M0 L0 T1 is equal to K, at the place of L we put this one value, and at the place of G we put this one value, and power is the same AB. Okay, now K is the constant, you know, L M0 T0 L की power A, and at that case L1 T minus 2 तो power L power B and M0 T power minus 2B. Okay, now 1 by 1 t1 is equal to k l a plus b. L a is here and b is also here. Okay, l की power is here and l की power b is here. Now we can put l the power a plus b, and m0 is here, 0 is here, so we can take m0. Now t 0 is here, 0 minus 2b to the power minus 2b. Okay, now a plus b l, okay, power of l a plus b is equal to power of this l 0 a plus b 0, and minus 2b is equal to 1, 0 is equal to 0. Okay, if I talk about the mass here, mass, okay, m the power 0 and m की power 0, that's mean, okay, it's a enough 0. Okay, so then according to that a plus b is equal to this L naught is equal to L की power a plus b, so that's mean a plus b is equal to 0, and t, okay, power of t1 is here and power of t minus 2 is this side, so minus 2b is equal to 1. From this we make a base b is equal to minus 1 upon 2. Okay, now put the value of b at that place, so the value of a is 1 upon 2, because a plus a minus 1 by 2 is equal to 0. When the 1 upon 2 move this side, the power, sign of addition is negative is a change, it's converted into addition. Okay, positive value. Okay, if you are confused, so that's mean you can focus on this a plus b is equal to 0. Okay, so b is equal to, we find minus 1 by 2. Now put the value of this in equation number 1. A plus minus 1 by 2 is equal to 0. Now a minus 1 by 2 is equal to 0, so that's mean a 0 plus 1 by 2, 0, it's enough. Okay, and no need you put this value 0 plus 1, so that's mean 1. So here 0 plus 1 by 2, so a is equal to kya hai, 1 by 2. Now the power of a and b, the value of the power a and b we find
तो then put the value t is equal to k l half 1/2 and g minus 1/2. So according to that, t is equal to k under root l by g. This one is the time period of a oscillation of a simple pendulum. It's the most important formula in chapter oscillation, the chapter number 13. Okay, now we use the dimensional formula to find the time period of a oscillation of a simple pendulum. Find or derive, you can, okay, mention anything. Next thing is the least count. It's most important for performing the practical. Okay, in physics, when you read any instrument, any device, firstly you find the least count of a device. So the smallest value, according to that, the theory part, the smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count or resolution. Okay, the smallest value of a measured value. So how we find the least count? So just focus on a board. There one is, suppose we have a simple scale. Zero to 10. Okay, the range of scale is 0 to 10. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, it's a 1. ठीक है, again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2, again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3. The range of scale is 0 to 3, not a 0 to 10. ठीक है, तो now you know its value is 1 and this one is value is 2, this one is value of 3. Okay, it's visible, ये मार्क किया होता है स्केल पे. But if we find this value, how we find? इस वैल्यू को क्या मेजर करोगे आप? ओके, इस वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ अ लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू number of, sorry, range of device या scale. This one is the formula to find the least count. A range of scale divided by number of divisions. A range of scale 0 to 3, number of division 10, 20, 30. Okay, 30 divisions are here. Okay, so that's mean 3 upon 30 one division is equal to 0.1. So this 0.1 is the least count of this scale. Means the smallest value of the scale is equal to a least count, and we find the least count according to this formula. This one is the method to find the least count. Now trick for learning. Okay, there one is the another method जो मैं खुद, ठीक है, मैंने खुद फील किया और खुद अप्लाई किया है इसको लर्न करने के लिए. वाई वी टेक होल स्केल. जेकर आपको पता है इसमें भी 10 डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं, इक्वल डिविजन्स हैं, तो वी टेक ओनली दिस पार्ट 0 to 1. तो 1 upon 10 इज इक्वल टू 0.1. फर्स्ट स्केल लेना है आपने, उसमें से आप फोकस. ओके, जैसे ही आप फोकस करते हैं फर्स्ट 0 to फर्स्ट स्केल पे मीन्स 0 to 1, you know the number of divisions is equal to 10, so 1 upon 10, so you can find 0.1 is the least count. Now if you find this method,
according to the range of this scale. And okay, whole scale, so you can find 0.1, and if you take okay the from the first division, so you can find the least count, the value is same. Okay, it is a trick for learning, but it is a correct method for finding the least count. Answer is the same. Okay, so this one is about the least count. Okay, next there one is okay, we had already discussed how we find, but simple. There one is the least count of this scale is 1 mm, least count of this instrument, which one is the vernier caliper. It's the most important okay instrument in your physics, in your engineering. Okay, when you enter a mechanical engineering, so you use this. Okay, firstly you use this, yeah, we learn from okay, learn the reading of the vernier caliper, ki how we read the vernier caliper. Without vernier caliper आप इंजीनियर को इंजीनियर नहीं कह सकते चाहे उसका 99% मार्क्स है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और वी कैन से कि इस इंस्ट्रूमेंट को जिसको रीड नहीं करना आता वो इंजीनियर नहीं है। इंजीनियरिंग की बेस ही ये स्केल है। चाहे आप अपने लोकल इंडस्ट्री जीएनए की बात की जाए, चाहे एनी ठीक है सोनालिका की बात की जाए, चाहे कोई मर्सिडीज कंपनी है, चाहे आपकी कोई ठीक है हीरो कंपनी है, एनीथिंग मींस रिलेटेड टू द व्हीकल्स, रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे जे स्केल रीड करना नहीं आता वो इंजीनियर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। इट इज द बेस ऑफ द इंजीनियरिंग। इससे आप एक्यूरेट वैल्यू मेजर करते हैं। ओके, सपोज कीजिए वी मेजर द लेंथ ऑफ दिस डस्टर। इस डस्टर की आप लेंथ मेजर करते हैं विद द सिंपल स्केल, वो आपकी रीडिंग आती है 5.7 और 6। ओके, मींस 5.6 एंड 7 के इन बिटवीन आती है। आप क्या काउंट करोगे? मींस एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकोगे आप, या तो आप लिख दोगे 5.6 और यू ओके, अदरवाइज यू राइट द 5.7, बट यू ओके नॉट राइट अ एक्यूरेट वैल्यू। यहाँ पे जे केसेस होते हैं ठीक है, तो देन वी यूज द वर्नियर कैलिपर फॉर द एक्यूरेसी। ओके, सॉरी, फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ओके, तो वी विल कंटिन्यू ओके इन प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, आपकी लैब में जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा कि हाउ वी रीड द ठीक है वर्नियर कैलिपर। इफ आई टॉक अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जस्ट रीड 0.1 mm। ओके, एंड अनदर आफ्टर द वर्नियर कैलिपर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द इंजीनियरिंग स्क्रू गॉज, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। सपोज कीजिए अब आपका कोई डायामीटर है 0.03 mm, वो सिंपल स्केल से, सो मेरे ओके सिंपल स्केल से यू कांट मेजर दिस डायामीटर। इन दैट केस वी यूज द स्क्रू गॉज। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये टू इंस्ट्रूमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। विदाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स नो इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियर नहीं है। मैकेनिकल बेस ऑफ मैकेनिकल, कंप्यूटर की नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है, नॉट अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। बट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। ओके, तो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू योर 11th फिजिक्स इज द बेस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड योर 12th फिजिक्स इज द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। Okay, so next one is the spherometer. Okay, if I talk about the screw gauge of a least count 0.0.01, and next one is the spherometer. It's your research work. Find why we use the spherometer. The least count of this 0.001 mm. Okay, now this one is the